In this video, we will discuss about inventory control. Inventory control. So inventory, आप जानते हैं कि what do you mean by inventory? Inventory is the stock or bhandar. We can say that the stock. Stock. So we define the inventory as a inventory. A inventory can be defined as a stock of goods. A stock of goods. That means several things we can consider for goods. So which is held for purpose of future. Okay, so basically we do the stock of goods. That means we can take the example of sugar, and we can take the example of various type of items. That means we can take an example of raw materials. Okay, for manufacturing any particular things. That means stock of cement. We can take about the civil engineering. That means concept. That means uh, cement, dust, etc. So now, so purpose of future production of sale. So we can write down as purpose of future production और सेल. तो दोनों तरीके के लिए हम यूज करते हैं स्टॉक्स को, कि चाहे हमें फ्यूचर में प्रोडक्शन करना हो या हमको सेल करनी हो. ओके, तो अब बात करते हैं कि जो स्टॉक ऑफ गुड है वो क्या हो सकता है. सो वी कैन डिफाइन एज द स्टॉक ऑफ गुड्स. सो द स्टॉक ऑफ गुड्स. So maybe kept in the various forms. So that means these forms are the first form, which may be in the form of raw material, raw materials. Raw materials कुछ भी हो सकते हैं. Second, when we are going to manufacture anything. Second is partly finished items, partly finished items. Third, which may be finished or prepared. Okay, finished or prepared, that means bread. That can take the example, prepare goods. और fourth will be in the form of the spare parts. ये हमारा स्टॉक है. स्टॉक some several forms है, but we are taking the common 4 examples. Now, so what is the objective of this inventory? So we can define the objective. The objective of an inventory problem is the minimize total cost. Minimize total cost or maximize, क्योंकि this is the portion of optimization technique. So we minimize the total cost or maximize the actual, or we can say that the expected profit. अब बात करते हैं कि स्टॉक की. अगर आपके पास स्टॉक होगा तो यू कैन प्रिपेयर द न्यू आइटम्स. और जब स्टॉक नहीं होगा, आपको अर्जेंट नीड होगी किसी भी आइटम की, तो हो सकता है वो महंगी कॉस्ट पे आपको परचेज करना पड़ेगा. देन यू प्रिपेयर. तो उस समय क्या होगा, आपकी प्रॉफिट कम हो गया. व्हेन यू हैव द sufficient stock, so you can prepare the items and sell as per the
प्रॉफिट, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड्स। तो फिर हम रोक भी सकते हैं आइटम को, अच्छी कॉस्ट मिल रही होगी, देन वी कैन सेल द आइटम। और जब हम हमारे पास मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से फिर ज्यादा होगा। ठीक है। तो बेसिकली इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, और स्टॉक में भी वी take in the form of raw material, partly finish the items, finish the prepared goods, or spare parts. Basically, we take the examples. Now, अब हमें जब इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्ट करना है तो इन्वेंट्री कंट्रोल स्टार्ट करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, कुछ टर्म्स होंगे जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल तो हम डिफाइन करेंगे आगे, पहले डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स पे जाएंगे, मॉडल्स को एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री। नाउ अब बात करते हैं कि इसके जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो वी कैन राइट डाउन द कॉस्ट वेरिएबल्स। तो फर्स्ट वी डिफाइन एज द कॉस्ट वेरिएबल्स। और कॉस्ट वेरिएबल क्या क्या होंगे? तो कॉस्ट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंटरी प्रॉब्लम। अब क्या क्या कॉस्ट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इन्वेंटरी प्रॉब्लम के लिए? तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। तो पहला वेरिएबल आएगा हमारा, फर्स्ट वेरिएबल इज दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, और वी कैन से दैट द स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। तो दिस वी जनरली डिनोटेड बाई C1। तो इसको हम C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब C1 से रिप्रेजेंट करने के बाद अब होल्डिंग कॉस्ट होती क्या है और स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? तो वी कैन एक्सप्लेन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ द इन्वेंट्री until it is sold or used, sold or used are known as holding cost or storage cost, known as holding cost or storage cost. Now we take the examples, that means so second in this holding cost, second is handling cost। अब handling cost क्या होगी? ये तो holding cost हो गई हमारी, कि which is associated with the storage of the inventory। जो भी आपने स्टॉक कर रखा है जब तक वो सेल नहीं हो जाता है, वी ऑल्सो नोन एज द होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, हैंडलिंग कॉस्ट। अब हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगी? अब जैसे कोई भी आइटम है आपने स्टॉक कर रखा है और उसको सेल करना है, अब उसको ले जाने के लिए एज वी रिक्वायर सम ट्रांसपोर्टेशन, वी रिक्वायर सम लेबर। अब लेबर भी रिक्वायर होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी रिक्वायर होगा। तो these are the involved in the whole handling cost, so which includes the cost of labor, transportation charges, etc. So this will involve in the handling cost. Now अब सेकंड हम बात करते हैं, पहले तो हैंडलिंग कॉस्ट हो गई, अब उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है? इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं हम किसको? कि कोई भी आपने शॉप है, शॉप हो गया या आपका वेयर हाउस हो गया, तो आपने रेंट पे ले रखा है, तो वो भी कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो वी कैन राइट डाउन एज रेंट फॉर द स्पेस और इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड
कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन दैट मीन्स हम किसी में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ले जा रहे हैं तो कुछ आइटम्स हमारे स्क्रैप में चले गए, खराब हो गए, टूट गए, तो दैट इज ऑल्सो ओन्ड स्पेस। नाउ अब ये तो सेकंड हमारा जो पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि जो भी कॉस्ट है, अब कॉस्ट जो स्टाफ हमने रिक्रूट किया है ले जाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ द स्टाफ, कॉस्ट ऑफ द स्टाफ रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड। अब आपने मॉल देखे होंगे, मॉल में आइटम्स रखे हैं, उसको स्टाफ भी मैनेज कर रहा है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है, कितना स्क्रैप हुआ, कितना रिटर्न हुआ, कितना आइटम्स क्या रहा। ओके, सो ऑल रिकॉर्ड विल बी मेंटेन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब जब हमारे पास सब कुछ है, होल्डिंग कॉस्ट और मतलब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के लिए हमें नेसेसरी थिंग क्या है आजकल, इंश्योरेंस। तो उसका इंश्योरेंस भी कराना होगा। ओके, तो इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के साथ में क्या आ जाएंगे फिर हमारे टैक्सेस भी आ जाएंगे, जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी एटसेट्रा, सो दिस ऑल्सो इन्वॉल्व। नेक्स्ट, अब जब हमने कोई भी इन्वेंट्री रखी है, मतलब स्टॉक रखा है, तो स्टॉक रखा है तो उसके लिए कुछ पेमेंट हमने किया होगा, पेमेंट किया होगा, तो उस पेमेंट पे इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। सपोज वो आपके पास पेमेंट है, तो आपने वो यूज कर लिया है उसके लिए, इन्वेंट्री के लिए, स्टॉक के लिए, बट आपने, आपके पास नहीं है तो कहीं से आपने उस पैसे को उठाया होगा, तो उसका इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। तो वी कैन इन्वॉल्व ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन द मनी लॉक्ड फॉर इन्वेंट्री। तो जो आपका मनी है वो लॉक्ड हो गया इन्वेंट्री के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको इन्वॉल्व करना है। तो दीज आर द पार्ट वी इन्वॉल्व इन दिस। नाउ we move to the second basic thing. तो second terminology we use the shortage cost। पहला हो गया स्टोरेज, अब आएगा शॉर्टेज। तो सेकंड इज शॉर्टेज और पेनल्टी कॉस्ट। शॉर्टेज और पेनल्टी कॉस्ट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, C2 से। शॉर्टेज कॉस्ट और पेनल्टी कॉस्ट। अब शॉर्टेज कॉस्ट और पेनल्टी कॉस्ट क्या होती है? तो शॉर्टेज जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई भी आइटम है, हमारे पास 10 का स्टॉक है और रिक्वायरमेंट हो गई 12 की, डिमांड आ गई 12 की, तो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। सो वी कैन डिफाइन दिस एज द अनसेटिस्फाइड डिमांड। अनसेटिस्फाइड मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज अवर शॉर्टेज। अनसेटिस्फाइड डिमांड और शॉर्टेज is incurred when the stock proves to be inadequate। inadequate to meet the demand of the customer। अगर हम डिमांड को, कस्टमर की को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द शॉर्टेज और ऑल्सो नोन एज द पेनल्टी कॉस्ट। नाउ वी डिनोटेड दिस बाई C2। अब इसको C2 से रिप्रेजेंट करना है, तो ये टर्मिनोलॉजी वी रिमेंबर। नाउ वी मूव टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज द, और इसी में हम ऐड करते हैं पहले बैकलॉगिंग क्या होती है। तो फर्स्ट वी इंक्लूड एज बैकलॉगिंग।
First we add the term backlogging. So for defining backlogging, so the storage can be fulfilled by back order. When the commodity next becomes available. So this is known as the backlogging. Now we move to the next definition, that is no backlogging. और no backlogging क्या होगी? नो बैकलॉगिंग। नो बैकलॉगिंग कब होगी? जब स्टोरेज हमारे पास सफिशिएंट होगा। तो द स्टोरेज क्वांटिटी एंड डिले टाइम बोथ or we can say that unsatisfied demand is lost. Unsatisfied demand is lost. So that is called the no backlogging. मैं सारा हम क्लियर करते जा रहे हैं. Now we move to the third one, that is the setup cost. So next definition, that is the setup cost, or setup cost we denoted as C3. So this setup cost we denoted as C3. Setup cost is or also called ordering cost. So we define as, so this is also called the ordering cost or replenishment cost. So this is also called ordering cost or replenishment cost. So we can write this as ordering cost or replenishment cost. तो ये किससे एसोसिएट होती है? If this is associated, we write down as this is associated with placing of an order. Placing of an order for purchasing goods. Or we can say that it is the cost. It is the cost of the setting a machine that we can setting that setting a machine before it start production. It start production. So this is the ordering cost. Now we move to the next definition, that is the demand rate. The next definition is demand rate.
दिस डिमांड रेट वी डिनोटेड बाई स्मॉल आर। और डिमांड रेट क्या है कि नंबर ऑफ आइटम रिक्वायर्ड होंगे हमें किसी पर्पज के लिए। ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिमांड रेट इज द नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड पर पीरियड, which is not necessarily equal to the amount sold तो डिमांड आपकी डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ आइटम आपको रिक्वायर्ड हो। दैट इज अवर डिमांड। वो जरूरी नहीं है कि आपके मतलब स्टोरेज के ही इक्वल डिमांड हो आपकी। हो सकता है कि शॉर्टेज आ जाए पर यू कैन फुलफिल दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो डिमांड हो सकती है हमारी, तो डिमांड के दो टाइप हो सकते हैं। वन इज डिटरमिनिस्टिक डिमांड और सेकंड इज प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड। ओके, so we write down demand may be two types. One is deterministic. डिटर्मिनिस्टिक डिमांड। और सेकंड क्या हो सकती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिमांड। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगी दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड। तो ये जो होगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक वो डिपेंड करती है फ्यूचर प्रोडक्शन आपका कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और डिटर्मिनिस्टिक डिमांड आपकी करंट पे बात करती है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज द लीड टाइम। और नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीड टाइम। तो व्हाट इज द लीड टाइम? सो दैट मीन्स लीड टाइम क्या होगा, जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ और ऑर्डर रिसीव करने से जो भी हमारा डिलीवर करने तक का जो गैप होगा दैट इज कॉल्ड द लीड टाइम। So the time gap between the time of placing order and the time of arrival goods is called lead time. Now, after understanding these definition, we move to the notations. तो हमारे जो कुछ important notations होंगे, so we write down the general notations used for inventory models। क्योंकि हमें इन्वेंट्री मॉडल्स डिस्कस करने हैं और इन्वेंट्री मॉडल डिस्कस करने के लिए so we use some general notations. So these are very important notations. We remember these notations. So we start with the first notation that is we can take as I. So capital I. तो I इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे द कॉस्ट कैरिंग ₹1 in inventory for unit time, for unit time. Next we represent C1. C1 we already discussed, हमने बताया कि C1 रिप्रेजेंट करेगा किसको, होल्डिंग कॉस्ट को और स्टोरेज कॉस्ट को। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द पर यूनिट टाइम होल्डिंग कॉस्ट
So or storage cost per unit time. Now, so per unit time आप लिख सकते हैं. So this can be written as per unit or per unit time. उसका टाइम जो भी होगा per unit time. Now we move to the next, that is C2. C2 is the shortage cost. Shortage cost same as per unit time. We move to the C3. C3 is the setup cost. So this is the setup cost. Setup cost किसके लिए होगी? Per production run. Per production run. That is the C3. Capital R, that is the total demand. ये तो टोटल डिमांड को, और स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिमांड रेट को. तो दिस रिप्रेजेंट द डिमांड रेट. टोटल डिमांड कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल आर से हम डिमांड रेट को रिप्रेजेंट करेंगे. और फिर आता है हमारा वेरिएबल के क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन रेट. ये जो प्रोडक्शन है हमारी किस रेट में हो रही है, दैट मीन्स दैट इज डिनोटेड प्रोडक्शन रेट. और सी वी डिनोटेड एज एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट per unit time. Next we move to the variable t. So t represents the time interval. T represents the time interval between two consecutive replenishment of inventory. Replenishment of inventory. Now L represent the lead time. L represent करेगा lead time को, and Z that represent the order level. And we have a Q star, T star, and Z star. These are the optimal values. These are the optimal values. So these are the notations we will use in models. So we start the deterministic models, that is known as the economic lot size models. So we will discuss in next video.